Today our topic is identification of noun. How can we identify a noun in English language? Let's start. Ending alphabets of the words are ism, shun, yun, meant, ing, list. Mentalism, station, vian, judgment, speaking, biologist, ness, age, hood, itty, g, goodness, homage, manhood, activity, biology. Identification of adjective. N, ad, l, ly, ing, ave, ish, us, ik, al, able, less, full. These are also ending alphabets of a word that show adjective. What's common? Ing, adjective, नाम, दूसरा नाम जेरेट. इंक वर्ब भी होता है और वर्ब का दूसरा नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल. अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. It is an interesting story. He is speaking in Urdu. Speaking is good habit. पहली वाली जो एग्जांपल है उसमें इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है. दूसरी वाली में देखेंगे इज के फौरन बाद आईएनजी वाली है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और वर्ब भी है. और यही वर्ड अगर हम फिक्रे के शुरू में लिखेंगे स्पीकिंग इज गुड हैबिट, तो ये एक्टिविटी के तौर पर आ गया, तो इसे हम नाउन भी कहते हैं और जेरेंड भी कहते हैं.